Namaste, I hope that you're doing well. So open order 39 of your Bear Act. Order number 39 वैसे भी याद होना चाहिए broadly that what is the title, that is temporary injunctions. We are primarily be going to be focusing on rules 1 to 5 in this very lecture. So now just imagine this, that you, ईश्वर ना करे, let us say you नहीं या कोई और कोई third person approaches a hospital for a brain surgery, that they have a brain clot in their head. एंड हॉस्पिटल कह रहे हैं हाँ ठीक है बैठ जाओ, 3 दिन बाद सर्जरी का नंबर आएगा और तब आपकी सर्जरी कर देंगे. और वो दैट आदमी इज इन टेरिबल पेन, ही इज अनएबल टू रिकॉल his own family members, he is unable to speak, he has difficulty in moving. वो कह रहे हैं भाई जब तक आप मेरी ब्रेन सर्जरी करो तब तक कोई कॉम्बी फ्लैम देगे, कोई बेड देगे, कुछ एसी वेसी ऑन करो और मुझे 1-2 नर्स दो जो कि हु टेक स्पेशल केयर ऑफ मी एंड प्रिपेयर मी फॉर द इवेंचुअल फाइनल थिंग दैट इज टू बी डन. So temporary orders are pretty much like that. That भाई litigation तो लंबी चलेगी ना, the case लंबा जाएगा. अब उसके अंदर बीच में like in the previous lectures to maintain everything as it is and to prevent further injury or further mischief, well you have such orders. Now हमने वो payment into court वगैरह सब कुछ हमने काम पिछले lecture में कर लिया. Now we are getting into the specific nitty-gritty details. You will also need to refer to section 38 to 42 of the Specific Relief Act. If you have the Bear Act copy, you can open it, and when I point towards it, then perhaps you can go over those sections. Just ऊपर से देखने ज़्यादा कुछ नहीं करना, but 38 to 42 के अंदर SRA 1963 में आपके permanent injunctions वगैरह के बारे में, specifically permanent injunctions वहाँ पे दे रखी हैं, and they are always to be read with order 39 of the CPC. तो अब बंदा कह रहा है कि भाई ब्रेन सर्जरी तो भाई बहुत बात की बात है, उससे पहले जो जिस पीड़ा में हूँ मुझे कुछ मॉर्फिन दो, मुझे कुछ पेन किलर दो, मतलब मेरा कुछ तो इलाज करना शुरू करो. सो कोर्ट ऑल्सो नोज दिस, सो इवन बोथ दी पार्टीज नो दिस. अब किसी पार्टी को जल्दी है, लेट अस से एक IPR का केस है जिसके अंदर आपका ट्रेडमार्क वगैरह वायलेट हो रहा है, तो वो कहता है भाई इसको पहले अभी अभी जब ये तो बाद में डिसाइड होगा कि मैंने इसका ट्रेडमार्क, मतलब इसने मेरा ट्रेडमार्क वायलेट किया कि नहीं, क्योंकि वो तो फाइनल जजमेंट में आएगा ना. तब तक इसको बोलो कि अपने बैग बेचने रोके. यहाँ पर जो भी बैग बेच रहा है जिसके चक्कर में उसका ट्रेडमार्क वायलेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से डिज्नी की कोई बैग है एंड देयर कार्टून कैरेक्टर्स का ट्रेडमार्क एक्सेट्रा इज गेटिंग वायलेटेड इन सम सदर बाजार साइड, जो कि वहाँ पे नॉर्मली होता है. तो वहाँ पे दी डिज्नी विल ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट द शॉपकीपर कि जब तक केस डिसाइड नहीं हो रहा तब तक तो ये माल नहीं बेचेगा, और जब केस अगर हमारे फेवर डिसाइड होगा तो परमानेंटली माल नहीं बेचेगा, लेकिन तब तक तो वैसे भी बेचना बंद करो, so that future damage is prevented. So that is primarily the core crux of this order only. So this is a necessary power to administer justice. So make these same points in your notes, all right? Interim relief जो दिया जाता है, that is primarily it negates one and one thing, that is a long trial. अब long trial तक आपके पास कोई लिटिगेंट आया है और वो कह रहा है प्लीज थोड़ा सा न्याय मिलेगा, आप कह रहे हैं हाँ मिलेगा तो सही, मेरे घर में एज अ जज आप कह रहे हैं मेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो कह रहे हैं जितनी देर आप कहते हो तब तक तो मैं तो वैसे ही लुट जाऊंगा, तो कुछ टेम्परेरी कुछ उपाय तो बताइए. जैसे कि हम अध्यात्म में भी, ज्योतिष में लोगों से उपाय कराते रहते, क्योंकि पता है कि फाइनल जो चीज़ आएगी वो तो बहुत बाद में आएगी, बट बीच में जो इंटरम रिलीफ, मतलब छोटा मोटी कोई बैंडेज लगा के अभी के लिए तो काम चलाओ, बाकी जो फाइनल जो काम होगा वो बाद में देखेंगे. ऑलराइट. So injunction is a judicial process, write this down, whereby a party is required to do or not to do / refrain from doing any act. Sounds very much like a writ of mandamus, no? Mandamus, Article 32, Part 3, Fundamental Rights, right? Mandamus, writ. And High Court भी writs लगवा सकता है, Article 226 वाले. It is an order. Well, it is in the form of an order भी लिख सकते हैं. It is an order of a court to a person that either addresses him to do, और इसको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं, addressed to a person that either addresses him to do or continue a particular act or prohibits him from doing so. So it is addressed to a person and is telling him to do or continue to do a particular act or prohibits from doing so. तो एक तरह से जैसे हम कहते थे which of the following writs is curative, right? एक तो होती है preventive, prohibitory, एक कहते हैं curative. So injunctions are also both in nature. So they are curative and they are both, they are positive and as well as negative in nature. लिखने की जरूरत नहीं, just for your conceptual understanding. So then there is something called as prohibitory injunctions, then they are called as mandatory injunctions. Basically injunction अगर मैं हिंदी में और इसको लेके जाऊँ तो एक तरह से कहते हैं टांग अड़ाना, लेकिन टांग अड़ा कौन रहा है?
कोर्ट ही अड़ा रहा है. सो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन में वो पीछे से कमांड दे रहा है कि तुम अब से ये काम नहीं करोगे, आई प्रोहिबिट यू टू डू दिस. एंड मैंडेटरी इंजंक्शन में तुम ये काम तब तक चालू रखोगे जब तक ये वाला केस डिसाइड नहीं हो रहा. अब ऐसी सिचुएशन जरा सोचिए किस में होगी. मान लेते हैं आप किसी कंपनी को माल सप्लाई कर रहे हैं एंड आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड सामने वाले ने मैंडेटरी इंजंक्शन निकलवा ली कि भाई साहब जब तक ये हमारी लड़ाई सुलझती नहीं है मुझे तो सामान चाहिए मेरा, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा. तो आप सामने वाले को द कोर्ट कैन इशू अ मैंडेटरी इंजंक्शन कि जब तक ये काम नहीं हो रहा है या इतने दिनों तक आप वो माल सप्लाई करिए ताकि सामने वाला doesn't basically is not at a disadvantage. All right. Now there is something called as a stay. So stay or injunction में there's a borderline difference, but there is a difference. Stay means stoppage, arrest or suspension of a judicial proceeding. कि इस केस पे stay लग गया कि this court will now no further not hear it further till the time any contingent conditions that are imposed are met. Now order of stay is addressed to a court while injunction is usually addressed to a person. And so the injunction is in personam, not in rem. याद आ रहा है कहीं से torts में कहीं सुना लग गया. In personam and not in rem. It operates as soon as it is issued, basically the injunction. And the stay is when it is communicated to the court. Just अपने bullet points बना लीजिए. अगर मेंस में आंसर आता है तो ये सब आपको लिखना अगर आपके स्टेट में आता है तो. Alright. Interim orders. Now what are interim? Interim, as I told you for the time being in the previous lecture, aid of and ancillary to the main relief. What is the main relief? The final determinations of rights and liabilities for which you have approached the court, available to the party on final determination of his rights in a suit or any other proceedings. All right. So this is ancillary to the main relief. All right. Now, of course, interim orders, interim, etc. By the word, you can only pass it during pendency of proceedings. The underlying object of interim relief is to maintain and preserve status quo and to prevent future possible injury. However, this is an extraordinary power of the court. Well, it is way wide. It can also violate somebody's legal rights. So the court or you as a future judge has to exercise immense caution while dealing with this. All right. Okay. Now you have injunctions. Now injunctions का ऐसे ही flow chart बना लीजिए और ऐसे ही अपने आंसर में. Temporary. So kinds of injunctions. So one is temporary as given to you in order 39. Permanent injunctions always ये रटना है. Section 38 to 42 SRA 1963 ये रटना है और अपने पास रट के रख लेना है. Now permanent injunctions is they are perpetual or forever. So basically, if a perpetual injunction is ordered against you as a litigant or as a defendant at the time of the disposal of the suit, if the permanent perpetual injunction is issued against you, then well, you are prohibited from doing that act forever. Else you will face the wrath of the court. All right. So this is only issued on merits at the conclusion of trial. Now what you can, and then temporary is at any stage of the suit. That is a key difference. So this is only at the conclusion of trial. This is at any stage of the suit. All right. Extremely crucial, extremely important. Now 38 and 40 ये वाला जो सीन है. अब आप पॉज करिए लेक्चर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बेर एक्ट खोलिए. 38 and 40 इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री. अगर आप केवल सीपीसी के कोर्स में एज एन सीपीसी वाले बैच में देन प्लीज कवर इट आउट ऑन योर ओन. हमारे जो जुडिशरी वाले जो भाई बंधु हैं 38 and 40 I'll take you through. I have to teach you specific relief act any which way, so I'll teach you that in the specific relief act module. I do not want to digress further into SRA at this point of time. All right, so 38 and 40 आप बस ऊपर से देख लीजिए. Please do me this favor so that when we come back to this lecture it will be easier. और अपने हर आंसर में जब भी आप लिखेंगे तो 38 to 42 मेंशन करना ही करना है. SRA 1963 रट लीजिए and order along with order 39. All right. Then injunctions are classified again. Well, one kind of injunction is preventive, prohibitive and restrictive. The other kind is, well, it is mandatory. Mandatory के अंदर it can compel, command or order some person to do something. So I am telling you to do this. So that is mandatory. If I am telling you that you will not be doing this, you can call it is a preventive, prohibitive, restrictive. Usually the most used word is prohibitive. Alright, so prohibitive injunctions and ये आपका
mandatory injunction, then you have temporary, permanent, same thing. We are just classifying them on their nature. मतलब अलग अलग nature है तो अलग अलग classification करी हुई है. All right. And then another classification that you can make. So there are three kinds of classification that we have. One is temporary, permanent. This is preventive, mandatory, and this is ad interim and interim. अब मुसीबत क्या है कि क्योंकि इतनी लंबी लंबी डेट दे देते हैं कोर्ट, क्योंकि कोर्ट की भी गलती नहीं है. लॉट मेनी केसेस जब when you sit at the seat of a judge, you will understand that there's a lot more. It was very easy to criticize the judicial system. However, it's insanely tough to manage it or to work through it. Now, so therefore you'll give a long date to somebody, and you give a long date, and आपके आगे जब तक किसी ने एक एप्लीकेशन लगाई है फॉर एन इंजंक्शन, एंड यू गिव देम अ डेट जो कि 3 महीने बाद हो गएगा. 3 महीने में जब मैं वापस आऊंगा ना, बिफोर दैट यू स्टार्ट इवन हियरिंग दिस एप्लीकेशन, सामने वाला तो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर चुका होगा. सो दैट इज एन एड इंटरिम. तो इसका भी एक तोड़ है, उस रिलीफ का नाम है एड इंटरिम. सो देयर इज वन इंटरिम and there is one ad interim कि जब तक, so everything has to be filed via applications to understand, to gain a more thorough practical oriented understanding. एक काम करना, गूगल पे जाना और टाइप करना ad interim, ये ad interim injunction application PDF. You will understand what I'm talking about as to how applications are drafted under CPC. So application लगाइए आपने कि सर ऐसा है, एप्लीकेशन आपने इंजंक्शन की लगाई है कि प्लीज मुझे इंजंक्शन दे दो सामने वाले की, जब तक आप केस करोगे कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप इस एप्लीकेशन को डिसाइड करोगे तब तक मुझे प्लीज आई प्रे फॉर एन एड इंटरिम इंजंक्शन. सो दिस इज ग्रांटेड विदाउट डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन एंड ऑपरेट्स टिल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन. ऑलराइट, राइट दिस डाउन. सो दिस इज ग्रांटेड without deciding an application for injunction and operates till disposal of application. Extremely crucial. मतलब एप्लीकेशन जो आपने इंजंक्शन की लगाई है उसकी अभी सुनवाई होगी क्योंकि उस पर आप डिसीजन देंगे. जब तक आप उसका डिसीजन दे रहे हैं तब तक कह रहे हैं तब तक तो इंजंक्शन दे दो बाबूजी. तो एक टेम्पररी की भी टेम्पररी है कि जब तक आप एप्लीकेशन देंगे मुझे इंजंक्शन की कोई बात नहीं, जब तक आप डिसाइड करेंगे तब तक मुझे एक ये काम करा दो. सो दैट इज कॉल्ड एज एन एड इंटरिम इंजंक्शन. नाउ देयर इज एन इंटरिम इंजंक्शन. इंटरिम इंजंक्शन के अंदर जो कि आपने एप्लीकेशन लगाई थी फॉर एन इंटरिम इंजंक्शन, वो अगर डिसाइड हो गई है इन योर फेवर, वेल पोस्ट दिस द इंजंक्शन ऑपरेट्स टिल सूट इज डिसाइडेड. ऑलराइट, दिस ओनली ऑपरेट्स टिल द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन इज डिसाइडेड. मान लेते हैं एक एड इंटरिम इंजंक्शन इशू कर दी और कल को कोर्ट को लगा नो देयर इज नो नीड फॉर एन इंजंक्शन इन दिस मैटर. The application is decided, the ad interim ends. However, अगर आपके केस में ईश्वर करे अगर आपको चाहिए हो तो interim injunction अगर आपको मिल गई है, it will operate till the suit is decided. Alright. तो hopefully अगर आपको इसका, अगर मैं एक flow chart से और थोड़ी सी इसको clarity कर लेते हैं. So you are the judge, right? You are the judge, and there are two parties. थोड़े से इनको शैतान बना देते हैं. एक डरा हुआ है और एक, दोनों लोग आए हैं आपके पास, एक एप्लीकेशन लगाते हैं प्लेंटिफ ऑफ इंटरिम इंजंक्शन अगेंस्ट दिस गाय. सो नाउ दिस एप्लीकेशन अब एक दिन लगी है, लेट अस से ऑन द 1 जनवरी 24 लगी, और आपने डेट दे दीजिए कि एक काम करो अभी टाइम नहीं है, अच्छा मतलब अगली डेट पे आना 2/3/24. अब ये जो 2 महीने का जो डिफरेंस है वो कहता है भाई साहब ये तो बहुत शैतान आदमी, सिर्फ शक्ल से ही भोला लग रहा है, आप इसकी शक्ल जरा ध्यान से देखो, ये तो मुझे खा जाएगा तब तक. तो अब इसके अंदर आप कह रहे हो जी मुझे एक एड इंटरिम दे दो, दैट यू डिसाइड द एप्लीकेशन, बट ये 2 महीने के लिए मुझे एड इंटरिम दे दो कि ये तब तक रुका रहे. और अगर मैं इस दिन जीत गया इन द सेंस दैट आई गेट एन ऑर्डर इन माय फेवर फॉर दिस एप्लीकेशन दैट आई फाइल्ड, this will then continue till disposal of suit. But let us say that you do not pass an injunction in my favor as requested in my application. Well, then the order will be passed in his favor and the injunction will come to an end. So that injunction will only last for these 2 months. And then let us say कि फिर केस लगा हुआ है 1/1/24 का, and आपका injunction continues till the disposal of suit. ये मतलब आप जीत गए इस दिन, you've gotten an order passed. So now this will continue till the time the final rights, the liabilities, the judgment and the decree is passed. Till then
the injunction will operate. Hopefully this is clear, right? Concept समझ लीजिए, because in mains जो judiciary exams, हर state के exam का जो pattern जो जा रहा है, they're trying to know whether you know the concept much more than let us say anything else. In fact, the concept has to be understood by you. So we are in order 39. Open your BERAC to order 39. Let's scan through this order. Temporary injunctions. Cases in which temporary injunctions may be granted. Wherein any suit. So which kinds of suit? Any suit. Pehla pre ka question. It is proved by affidavit or otherwise affidavit. Order 19 always. That any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party. So who can apply for a temporary injunction? Plaintiff, defendant, any party, none of the above. Any party. To the suit or wrongfully sold an execution of a decree, or that the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors. ये पहला ही भगौड़ा बनना चाह रहा है कौन आदमी? That the defendant. Pre का एक और question and pre का broadly एक और question. प्री का ब्रॉडली एक और क्वेश्चन. और दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. जहां पे लिस्ट खत्म हो रही है, अगर इसके बाहर कोई केस फॉल आउट करता है देन अंडर सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. अगर नहीं याद आया कि सेक्शन 151 में क्या है, pause the lecture, open the BERAC and check what 151 is. Alright. The court may by order. So how are temporary injunctions granted? Via orders only. अब मुझे याद आया, I think this is a good time now to proceed ahead to ऑर्डर्स, डिक्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद चलते हैं विड्रॉल वगैरह पे. विड्रॉल के बाद वो थोड़ी सी आई थिंक डेथ ऑफ अ पार्टी वगैरह करनी है, एंड देन द फाइनल जजमेंट, डिक्री एटसेट्रा, एंड देन बेसिकली अपील पे जाना है. अपील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई वांट टू स्ट्रक्चर इट. खैर अभी लेट अस से वहाँ पे नहीं जाते, देखते हैं. ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट और मेक सच अदर ऑर्डर for the purpose of staying and preventing the wasting. कुछ रट्टा नहीं मारना है, just mark it out in your BERAC. ये पूरा का पूरा प्री का क्वेश्चन है. Alright, so mark it. Injunction to restrain repetition or continuance of breach. अब यहाँ पे क्या, this is specifically for breach of contract. Now breach is a way to discharge a contract. In any suit for restraining the defendant, okay, from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in a suit or not, the plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment, देख लीजिएगा, apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right. Just mark this out, before or after judgment, ये चीज. एंड ये काम कौन करेगा? प्लेंटिफ. सो दिस इज अ स्पेशल रूल मोस्टली यूज्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले केसेस, जिसके अंदर सामने वाले को आप फ्रॉम रिपीटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप रोक रहे हैं बाय ऑब्टेनिंग अ टेम्परेरी इंजंक्शन कि भैया इसको रुकवा दो प्लीज यहाँ पर. ऑलराइट. अच्छा, एंड दिस एनी पार्टी टू द सूट. नाउ you cannot get a temporary injunction, ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, not against a stranger or a third party or a non party. ये कृपया करके ये अपने पास लिख लीजिए. alright. Now what is the duration of the injunction? Is there any timeline that has been given to you? No. The court may by order grant such injunction on such terms well as the court thinks fit. It is as simple as that. Now let us say if somebody जिसके खिलाफ temporary injunction has been issued, वो नहीं मानता, वो कहता है नहीं भाई साहब मैं तो नहीं मानता. Okay, so 2A is, in the case of disobedience of any injunction granted or other order made under Rule 1, Rule 2, breach of the terms, etc., may order, so basically any court to which the suit or proceeding is transferred may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached. Right, so well, we are moving towards attachment of property before judgment as we discussed in the last lecture, and may also order such person to be detained in the civil prison for a term not exceeding 3 months unless in the meantime the court directs his release. Standard pre ka question, what is the maximum term of civil prison when a temporary injunction is not followed or breach of injunction is there? 3 months, yaad rakhiye. All right. And
नो अटैचमेंट ये भी अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 year. दिस इज अनदर प्री का क्वेश्चन. अटैचमेंट जो इस ऑर्डर की स्पेसिफिकली फॉर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? अटैचमेंट इज 1 year. ऑलराइट. वैसे अटैचमेंट ही सारे दुखों का दर्द है. सॉरी, दुख और दर्द का नाम ही अटैचमेंट है. किसी से ज्यादा अटैच हुइएगा मत. ऑलराइट. बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी. The court shall in all cases except where it appears the object of granting injunction would be defeated by the delay before granting injunction direct notice of the application for the same to be given to opposite party के सामने वाले को बताओ that such an application is being moved that to for an injunction to get passed against you, provided that where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by delay and require the applicant. So basically this is talking about ex parte, right? And 3A will also talk about ex parte. कि अभी इतना टाइम नहीं कि सामने वाले को नोटिस दें, फिर वो आएगा, फिर वो अपना जवाब रखे, कोई बात नहीं, तो कहता सीधा. लेकिन एप्लीकेंट के ऊपर कोई शर्तें हैं. To deliver to the opposite party or to send him by registered port immediately after the order granting the injunction has been made a copy of the application of the injunction, copy of the affidavit, copy of the plaint, copies of document on which the application relies, and to file on the day which such injunction is granted or on the day immediately following that day an affidavit stating that copies aforesaid have been so delivered or sent. तो देखा फिर से plaintiff को हमने फिर पकड़ लिया कि तू जाके पकड़. मतलब plaintiff in the sense इस केस में नहीं, प्लेंटिव यहाँ पर नहीं, एप्लीकेंट. क्योंकि देखो एप्लीकेंट ही लिखा हुआ ना, प्लेंटिव डिफेंडेंट नहीं लिखा हुआ. सो आइदर पार्टी कैन डू दिस. आप लगा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन और यूजुअली सामने वाले को नोटिस दिया जाएगा. बट लेट अस से दैट द कोर्ट आल्सो थिंक्स एंड यू आर आल्सो प्रेइंग कि अगर ये सामने वाले को नोटिस देते हैं एंड देन द अदर गाय रिप्लाइज एंड बाय द टाइम दैट विल बी डिसाइडिंग द एप्लीकेशन much damage will be done. So the court can grant an injunction. However, it requires the applicant to send all of these documents and to submit an affidavit order 19 in the court that he or she has done so, that they have sent the document. So the onus is on you if you approach the court. 3A, court to dispose of an application for injunction within 30 days. Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, so technically speaking, we're in violation of audi alteram partem, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the injunction was granted. This is a standard pre-ka question that in ex parte injunctions, what is the time, what is the maximum time allowed to decide the application for injunction? That is 30 days from what? From the date on which the injunction was granted. ठीक है जी. ओके, नाउ या दिस इज प्रीटी मच इट. अच्छा, प्री का एक और क्वेश्चन. दिस इज रूल 5. इंजेक्शन टू कॉर्पोरेशन इंजेक्शन लिख दिया बेवकूफ उन्हें. इवन दो दिस इज इंडिया कोड की बेर एक्ट इंजेक्शन लिखा हुआ. अब तो खैर जो नई वाली जो आई है वो तो और ही महान है, बट एनी विच वे नई वाली इन द सेंस जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की आई. An injunction directed to a corporation is binding on who? Only on the corporation. But rule says not only on the corporation, but also on all members and officers of the corporation whose personal action it seeks to restrain. This is standard. तो ये पूरी आधी लाइन दे देगा और यहाँ से ऑप्शन पूछ लेगा on whole of the corporation. Alright, interlocutory orders नीचे लिखे हुए हैं, but interlocutory orders छोटा सा टॉपिक है. We will do, perhaps I'll club it in with withdrawal of suit in the next lecture. अभी मेरा focus यहाँ पर है. Before temporary injunction is granted, now this you have to write. If you're writing a note, if you are writing in a mains ka answer in any state that they ask you this, you have to write this. There are 3 conditions और ये रटना है. Whether plaintiff has a prima facie case, पहली बात. Whether plaintiff would suffer irreparable injury if his prayer for temporary injunction is not granted, that is the second point. And third, whether balance of convenience is in favor of plaintiff. Alright, let me repeat it so that you can keep on writing it while the lecture is playing. Whether plaintiff has a prima facie case, मतलब कोई सामने वाले के पास कोई केस बन भी रहा है इसका, you as a judge have to decide that कि इसके पास कुछ point है भी. Whether plaintiff would suffer irreparable injury if his prayer for temporary injunction is not granted, because temporary injunctions are very wide, extraordinary power, no? So you have to continuously check. Alright, तो अगर
अगर वाकई में is there a chance, if there is a chance of irreparable injury, then तो it is okay, but otherwise sorry, no temporary injunction is being granted to you. Where the balance of convenience is in favor of the plaintiff. So this is the three pillars of this test, and this is also known as the triple test for interim injunctions. ये लिख कर ही आना है. I'll just give you some brief case laws as well. So the prima facie aspect was well explained in Martin Byrne Limited versus R.N. Banerjee. Irreparable injury was elucidated in American Cyanamide Company versus Ethion Limited. This is irreparable injuries. What do you mean by irreparable injury? Which cannot be adequately compensated by damages. And आपका balance of convenience या balance of inconvenience was held in the same case in American Cyanamide Company versus ये आपका ये Ethion Limited. And I'll display the case name on the screen. And अगर time मिला तो otherwise खैर मतलब in any case I'll let you know the case name. And breach of contract, again sorry, balance of convenience, not breach of contract. यही same case is there, but इनमें एक लॉर्ड डिप्लॉक थे. तो दिस इज अगर आप कभी LLM के एग्जाम में बैठे तो पूछ लेते हैं हु बेसिकली इस पर्सनालिटी का नाम पूछ लेते हैं इन रिगार्ड्स टू बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे टिप्पणी या ओवरऑल टेम्पररी इंजंक्शन पे टिप्पणी वाज मेड बाय लॉर्ड डिप्लॉक. ऑलराइट, लॉर्ड डिप्लॉक जी गुजर गए, बट उनका नाम आज तक दुनिया में कायम है. ऑलराइट, नाउ इफ द कोर्ट थिंक्स that by refusing interim injunction, ये वाली handwriting थोड़ी नहीं समझ में आएगी, that's why I'm dictating it out to you. If the court thinks that by refusing the interim injunction, I square लिखा हुआ, I square is interim injunction, more or greater inconvenience will be caused to the plaintiff, well then you grant it. कि भाई टेम्पररी इंजंक्शन की प्लेंटिफ अगर प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगा कर आया है, अगर इफ द कोर्ट डज नॉट ग्रांट इट, मोर और ग्रेटर इनकन्वीनियंस, बिकॉज एक पार्टी तो इनकन्वीनियंस पे जाएगी ना इससे टेम्पररी इंजंक्शन पे. आइदर दे विल बी वेल मैंडेटेड टू डू अ थिंग बाय मैंडेटरी इंजंक्शन और आइदर दे विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग अ थिंग. तो एक पार्टी तो दुखी होने वाली है पक्का से. So more or greater inconvenience will be caused to the plaintiff, well then granted. If by granting the greater inconvenience will be caused to the defendant, well then you refuse to grant it, because we'll have to balance both the parties out. That is eventually the point of justice any which way. All right, so eventually, like the as a future judge tomorrow, the greater hardship who will suffer by you either granting the injunction or denying it, who will suffer the greater hardship. So that has to be the basis for you to use this wide and extraordinary power. So power to grant injunction is extraordinary in nature. ये लिख लीजिए, party is not entitled to this relief as a matter of right or course. This is an equitable remedy. This is purely in your hand as a judge. कोई भी आपके जैसे bail is a matter of right. This is temporary injunction, not a matter of right. वो कहता मुझे ठीक लगेगा अगर बिल्कुल न्याय को ये aid करेगा to administer the justice, administer the ends of justice, well then you are going to be granting the injunction. Otherwise, sorry buddy, no. Alright, so the court grants such relief ex debitio justitiae, जो हमने पहले भी करा हुआ है, to meet the ends of justice only. You cannot approach it shouting कि you should have given me this relief, नहीं तो देखो क्या मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है. The classic case law is Dalpat Kumar versus Prahlad Singh. Dalpat, DALPAT, Kumar versus Prahlad Singh, in which the Supreme Court had remarked that the court, while granting a temporary injunction, has to exercise sound judicial discretion in granting or refusing such an injunction, because this is an equitable remedy, and well, this has to be granted with the utmost caution. Where matter is outside Order 39's list, well then Section 151, inherent power of the court, similar to 482 of the CRPC. खैर अब तो 482 बदल गया है in the newest CRPC. मुझे I have to make it sit on my tongue. So Section 151 applies to interim injunction, and well, that is granted. The classic case law for this is Morgan Stanley Mutual Fund versus Karthik Das, in which the classic case law for ex parte interim injunction is Morgan Stanley Mutual Fund versus Karthik Das, in which not in which, just generally telling you this is ex parte interim injunction. Now this is extremely important, you have to mention it in your answer. Interim orders have no precedential value, so no doctrine of stare decisis as given in Article 141. You can't quote from other cases as a lawyer. अगर कोई आपके पास आके कहता है
सर देखो सिमिलर केस में सिमिलर फैक्ट्स में वो दूसरे केस में भी इंटरिम रिलीफ तो मिला ही था, इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट हुई थी, सॉरी बडी, no interim injunction has any precedential value. So precedent, so it is not a precedent. These are equitable remedies within the cases. ये इनकी कोई दूसरे cases में value नहीं है. Please write such pointers in your answers. You will fetch more and more marks. All right. So, and the doctrine of res judicata applies to different stages of same suits. Therefore, they apply to interim injunctions as well. So once the interim injunction I square is granted or refused, it operates till disposal. It is pendent light, pendental light, how the correct pronunciation in Latin is going to be. All right. Now, if the suit is decreed, the injunction is then vacated. Well, final decree पे तो फिर injunction चलनी बंद हो जाएगी ना. And एक injunction वो जो permanent nature वाली, perpetual चलने वाली, वो तो at the disposal of suit आएगी. But we are talking about the temporary injunction that is past the different stages of the suit. Is an injunction subject to appeal? It is. Order 43 Rule 1 Clause R. इसको देख भी सकते हैं, but I'll get back to it in the appeals वाला lecture. Is it subject to revision under section 115? Standard बोलना शुरू कर दीजिए revision के साथ हमेशा 115. Yes, absolutely. 151 में भी flip मार दिए मैंने, मतलब ऐसे याद करने का तरीका. 151 inherent power of the court and flip करके 115 is well revision. So can you apply for revision for an I square? Yes, you can. And interim injunction under case decided, well, because it falls under the definition of case decided in 115. And SLP, can you approach to the Supreme Court under Article 136 via special leave petition against, let us say, an order of interim injunction passed against you? Only in exceptional cases. Usually the Supreme Court will dismiss it outright. नहीं पहुंच पाएंगे. I believe, in real life आप नहीं पहुंच पाएंगे. Alright, so that's it for today's lecture. Now we are pretty much through with this topic, except एक वो छोटा सा interlocutory orders primarily used in IPR cases very very frequently, तो उसको मैं अगले lecture में आपको cover करा दूंगा, और फिर वो withdrawal of suit वगैरह पे चलते हैं. And we are steadily now marching on towards finishing CPC. Mainly I think 5 odd lectures are left, mainly to cover out the main topics, and then it's done. Then we'll move on to limitation, and then see where this goes. All right. And I wish you all the very best. I hope it has been of immense help to you and has helped you speeden up your preparation for whichever state's judiciary exams that you want to take, or even for your semesters, or even for your LLM, in whichever mode that you're watching this in. I wish you all the very best. Do take very good care of yourself. I see you in the next lectures. Take care. Bye.